Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing complex integration f of z dz along some path gamma, and it was defined as this is equals to from a to b f restricted onto gamma of t gamma derivative of t dt. And in the last lecture, we discussed that in order to find complex integration, which is in fact a path integration, we should know some basic types of paths in complex plane. The first of such type is the simple curve or simple path. A simple path is a curve gamma of t. It's a basic definition of the path. Its real coordinate is x depending upon variable t plus iota imaginary part y depending upon variable t. Is called simple if there does not exist two different values in this interval ab, t1 and t2. There does not exist such that the point gamma of t1 and gamma of t2 coincides in the plane. It means if you move along this interval, here is some t1, here is this value gamma of a is a point in complex plane, and if you move along on this interval, there is some point t1 and you are here at this point gamma of t1, and if you keep on traveling, you reach at t2 when you travel on this curve, and there is a point t2 on which you again reach at the same point gamma of t2, and then if you keep moving on, this is the point gamma of b, and this curve is called non-simple curve because it has a self-intersection. It intersects itself. Such a curve is called non-simple. A curve which does not crosses itself, that curve is called a simple curve. Means there does not exist any two values t1 and t2 such that they are different, but the images of gamma correspond to the same point. It simply means that your gamma from this interval I to C should be injective, should be 1 to 1 injective. Then the image will be, then the image gamma of t is called simple curve. So it's called simple curve. For example, this curve is a simple curve. For example, this curve is not simple. This curve is simple. It's a simple curve. Now we move towards next definition. तो सिंपल कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व सिंपल कर्व होता है जो सेल्फ इंटरसेक्ट या खुद को प्लेन के अंदर सेल्फ इंटरसेक्ट ना करे. दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व. लाइनें सिंपल कर्व्स हैं. ठीक है. अब हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप, दैट इज क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या होता है? तो दिस इज इंटरवल ए बी, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन सी,
what will be a closed curve? If we have this curve, and moving along this curve, at some starting point is this gamma of A and ending point is this gamma of B, and these 2 points coincide with each other. Means we will say that this curve gamma from some interval AB to C is closed if gamma of A equals gamma of B. यानी क्लोज्ड कर्व क्या है कि A पर जहां पे आप हैं, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है आपके इंटरवल की, B पर भी आप दोबारा वहीं पे होंगे, उसी पॉइंट पे, तो तब आपका जो कर्व है ये कहलाएगा क्लोज्ड कर्व. ठीक है. लेकिन ये आपके पास एक ऐसे कर्व की एग्जांपल है जो कि क्लोज्ड है बट नॉट सिंपल, क्योंकि आपके सामने ये सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है. फॉर द मोस्ट केसेस हमें ऐसे कर्व्स की जरूरत होती है जो सिंपल, यानी सिंपल का मतलब जो सिर्फ क्लोज्ड हो. ठीक है. यानी क्लोज भी हो रहा, सिंपल भी हो. दे आर कॉल्ड जॉर्डन कर्व्स. ठीक है. जॉर्डन कर्व क्या है? जॉर्डन कर्व क्या है? अ कर्व विच इज closed as well as simple. Third type is, for example, this curve is a Jordan curve. All circles, consider this circle, it is a Jordan curve. This curve is closed but not simple, so it is not a Jordan curve. So when you have a Jordan curve, you want to give some orientation to the curve. यानी आप जब एक आपके पास जॉर्डन कर्व आएगा तो आपने देखना है कि मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है. तो इसमें दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो हम कहेंगे पॉजिटिवली ओरिएंटेड जॉर्डन कर्व क्या है? पॉजिटिवली ओरिएंटेड जॉर्डन कर्व क्या है? वो है a Jordan curve in which is anti-clockwise oriented. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस कर्व, अगर आप ये देखें तो ये ओरिएंटेशन कौन सी है? क्लॉकवाइज. दिस इज नेगेटिवली ओरिएंटेड जॉर्डन कर्व, नेगेटिवली ओरिएंटेड. इफ यू रिवर्स द ओरिएंटेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ओरिएंटेशन ले लें, ये कर्व है हमारे पास, ये लें, ये ओरिएंटेशन हम ले रहे हैं, तो ये जो है ना, दिस इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड जॉर्डन कर्व. सो बेसिकली हमने सबसे पहले आज समझा कि सिंपल कर्व क्या है, नेक्स्ट हमने समझा कि क्लोज्ड कर्व क्या है, नेक्स्ट थर्ड इसके बाद हमने समझा कि जॉर्डन कर्व क्या है. ठीक है. और एक जॉर्डन कर्व के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी एसोसिएट होता है कि एवरी जॉर्डन कर्व जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है वो इस कर्व का एक्सटीरियर है और ये पॉइंट जो इस कर्व का इंटीरियर है. लेकिन यहां जो कि जॉर्डन कर्व नहीं है, ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है. लेकिन जॉर्डन कर्व जो है इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई कर्व है जो कि जॉर्डन कर्व है, लेट्स से ये जॉर्डन कर्व ले लें आप, ये जॉर्डन कर्व ले लें, ये वाला, लेट्स से.
सिंपल एंड क्लोज्ड। तो ये पॉइंट वन इज श्योर के ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, चेक करते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। ये इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट स्टिल एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हर पॉइंट या वो इंटीरियर होगा या वो एक्सटीरियर होगा। दैट इज कॉल्ड जॉर्डान कर्व थ्योरम। हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है। तो एवरी पॉइंट, अगर ये जॉर्डन कर्व है हमारे पास, तो प्लेन का हर पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर दैट। तो फॉर मोस्ट रिजल्ट्स हम अपने कर्व को जो कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, वो हमारे पास जो नीचे कर्व जो होगा वो फॉर मोस्ट एग्जांपल्स क्या होगा, जॉर्डान कर्व होगा, यानी सिंपल प्लस क्लोज कर्व होगा। उसके लिए हम कुछ जनरल फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे।